Now the field intensity due to field intensity on a point at a point at a point on equatorial line of dipole. Okay. Field intensity at a point on equatorial line of dipole. So how will we find out this one? तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करेंगे, है ना। तो यहाँ हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ये पॉइंट ए हो गया, ठीक है। यहाँ हमने मान लिया प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ ये हमने मान लिया पॉइंट बी, और यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, और ये इसका सेंटर है। ये सेपरेशन बी के इक्वल है, और ये सेपरेशन भी किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, और ये इसकी कौन सी लाइन होगी, इक्वेटोरियल लाइन होगी, है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को बोलते हैं इक्वेटोरियल। और इस पे कोई पॉइंट हमने मान लिया, यहाँ ये कोई पॉइंट पी है, और इस पर हमें फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तब यहाँ फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या लेके चलेंगे अपन, इसको समझे पहले। थोड़ा सा ठीक है, तब इसका अपन कॉन्सेप्ट क्या लेके चलेंगे वो समझ रहे हैं यहाँ पे। कि आपको फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है इस पॉइंट पे, तो क्या होगा, ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ फील्ड इंटेंसिटी होगी, और उसका डायरेक्शन ये होगा, ये हो गया हमारे पास ये, ठीक है। ऐसे ही जो माइनस क्यू चार्ज है, उस माइनस क्यू चार्ज के कारण भी यहाँ पर इंटेंसिटी होगी, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, और ये हो गया ये। और हमको इनका क्या करना है, नेट या रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो अब उसको फाइंड आउट करने के अपने पास जो मेथड है वो टोटल, या वो 3 मेथड है अपने पास कि हम यहाँ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो है वो आर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे आप जनरल सिनेरियो लिखेंगे। जनरल सिनेरियो में क्या आएगा, कंसिडर है an electric dipole whose charge magnitude is q and the dipole length is 2d. Suppose we want to find out the field intensity at point P on its equatorial line, and it is at a distance r from the center of the dipole. Okay, तो ये एक जनरल जो है वो हमारे पास सिनेरियो हो जाएगा। और इस जनरल सिनेरियो के साथ नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, लेट EA and EB are the electric field intensities due to charges plus Q and minus Q respectively at the point P. Okay, right? Then
ए और ईबी की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ई ए इज इक्वल टू क्या होगा? ये की वैल्यू क्या होगी बोलो? That will be equal to KQ upon 80 square along 80. Okay. And what is the value of 80? Let it be X. What we are considering due to symmetry, both will be X. So this will be equal to KQ upon X square along 80. Equation number 1. Now, what will be EB? EB will be equal to KQ upon BT square, and it is along TB. Again, it will be equal to KQ upon X square along TB. Equation number 2. Now, from triangle AOT, right, or triangle BOT, what we can conclude that x square is equal to r square plus b square, है ना? कौन सा ट्राइंगल है ये? राइट एंगल ट्राइंगल, therefore using Pythagoras theorem, right? And therefore x will be equal to under root r square plus b square. Or you can write r square plus b square power 1 by 2. Equation number 3. Now we have also the conclusion also from 1 and 2, that magnitude of EA is equal to magnitude of E. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और इसको हमने जो है मैग्नीट्यूड को कंसिडर कर लिया सपोज E. ओके, ये इक्वेशन नंबर हो गया 4, करेक्ट। अब यहाँ से आगे सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, यानी तीनों मेथड में से आप कोई सा भी मेथड यूज में लें, आपको यहाँ तक तो क्या करना है, सेम सॉल्व करना है, सिमिलर सॉल्व करना है। इसके बाद आपके पास 3 मेथड है इसको सॉल्व करने के। तो फर्स्ट मेथड देख रहे हैं अभी अपन, ठीक है, इसको सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड देख रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट मेथड के लिए डायग्राम जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। यही डायग्राम जो हमने बनाया है, ये डायग्राम जो है वो सेम रहेगा। इसी में मैं चेंजेस कर देता हूँ जो हमको और ऐड करना है, ठीक है। इनका जो रिजल्टेंट हमको फाइंड आउट करना है, वो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये रिजल्टेंट होगा, और सपोज इसको हमने रिजल्टेंट को क्या लिखा, इक्विटोरियल। So this will be the direction of equatorial. So in the first method, what we are using, in this first method, we are using the triangle law for vector, not for vector addition, triangle law for vectors. Now, what is the triangle law of vectors? First we understand that thing, है ना। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स जो है वो क्या होता है, तो यहाँ इसको समझें कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स का स्टेटमेंट क्या होता है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर आपको क्या स्टेट करता है कि अगर कोई ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स हैं, उन तीनों साइड से हम किन्हीं जो है वो 3 वेक्टर्स को अगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ए बी और सी हो गया। सपोज ये साइड पे कोई वेक्टर पी है
और इस साइड से हम किसी वेक्टर Q को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस साइड से किसी वेक्टर R को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि अगर हम ऐसा कर सकते हैं कि तीन वेक्टर्स हैं और उन तीनों वेक्टर्स को हम ट्रायंगल की तीन साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? तीनों जो है वो को इनिशियल वेक्टर्स होने चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट इनका सबका क्या है? सेम होना चाहिए। तो एक ही पॉइंट पे एक तरह से एक्ट करने चाहिए। तो किसी तीन वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, अगर हम उनको ट्रायंगल की तीन साइड से अगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ऐसे केस में क्या इस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या रहता है? सेम रहता है। यानी इस केस में अगर हम बात करें तो ऐसा हो जाएगा, वेक्टर p उसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये वेक्टर p कौन सी साइड से रिप्रेजेंट हो रहा है? AB से। तो p अपॉन ए बी इज इक्वल टू q अपॉन ए सी इज इक्वल टू r अपॉन बी सी। ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड हम यूज में ले रहे हैं। नाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट of E and EB, we use triangle law for vectors. According to this, if three vectors are represented by three sides of a triangle, then the ratio of magnitude of vector to its side is remain constant। ये इसका स्टेटमेंट हो गया, है ना। कि अगर हम ट्रायंगल्स की तीन साइड से तीन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उस केस में रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर टू इट्स साइड रिमेन कांस्टेंट, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी लिख सकते हैं, टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड लिख देता हूँ मैं, राइट। अब उस ट्रायंगल लॉ को हम यहाँ पर अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे? देखो एक बार उस चीज को समझते हैं कि यहाँ कैसे अप्लाई होगा, है ना। जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को अगर अपन फॉलो करते हैं, ना, स्टेटमेंट क्या स्टेट कर रहा है यहाँ पे, अगर अपन बात करें तो स्टेटमेंट बोल रहा है थ्री वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द थ्री साइड्स ऑफ अ triangle, then the ratio of magnitude of vector to its corresponding side remains constant। तो यहाँ हमारे पास तीन वेक्टर कौन कौन से हैं? पहले अपन अगर बात करें तो ये तीन वेक्टर हमारे पास EA, EB and E equatorial। Okay, now these are acting at this point only, and now we are able to represent these three vectors। इन तीनों वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कौन से ट्राइंगल से? ट्राइंगल ATB। Okay, this is the triangle in which we can represent like this side is representing EA, okay, this side is representing EB, and this is the direction of E equatorial which can be represented by side AB। Okay, so what we can now use this one, that we are able to represent this one, right? This one is EA, this one is EB, and this one is E equatorial। Got it? है ना। तो इसको अब हम क्या कर रहे हैं? यूज में ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर अब हम
चाहे तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के लिए, ताकि आपको बाद में भी ध्यान रहे, लिख भी सकते हैं अपन पहले एक बार। तो यहाँ अपन इसको लिख लेते हैं, कौन कौन से वेक्टर्स हमारे पास है। तो सिंस वी हैव 3 वेक्टर्स, since we have 3 vectors EA, EB and EQUITORIAL. Okay, these are the 3 vectors, and these can be represented by the sides of triangle ATB. Okay. EA is along AT, EB is along TB, and E equatorial is along AB. So, using triangle law of vectors for these, अब इसके लिए हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स को क्या करें, यूज में लेते हैं। तब उस केस में क्या हो जाएगा, जब आप इसको यूज में ले रहे हैं, साइड magnitude of vector to corresponding side. Okay, so magnitude of vector is EA, corresponding side is AT, is equal to magnitude of vector is EB, corresponding side is BT, and magnitude of vector E equatorial and corresponding side is AB. Okay, now we want to find out the E equatorial, so we can use either this combination, these two compare, or either this combination, we can compare these two. And since EA and EB is having the same magnitude, AT and BT is also equal, so we can use any one of these two combinations. So comparing, therefore, what we can write, EA upon AT is equal to EQ upon AB. So EQ is equal to AB upon AT multiplied by EA. Now putting the values, AB is 2D, okay, AT is X, and EA is KQ upon X square. And therefore, what is EEQ? EEQ is KQ into 2D upon X cube. Now what is Q into 2D? What is Q into 2D? Q into 2D is equal to P, dipole moment. Okay, so E equatorial is equal to KP upon X. And what is X? X is equal to R square plus D square power 1 by 2. So it will become equal to R square plus D square power 3 by 2. Okay. So this will be the magnitude of E. And it is equation number 1, 2, 3, 4, and this one is 5. Right? And now what is the direction of this? What is the direction? If we use this one, what is the direction? It is in the direction from this point to this point, that is direction, it is directed from A to B. And what is the direction of dipole moment? From B to A, because it is always from negative to पॉजिटिव चार्ज है ना, ये नेगेटिव चार्ज से हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट।
तो वो बी से ए होगा, और यहाँ अगर हम इक्वेटोरियल का डायरेक्शन देखते हैं तो ए से बी है। दैट मीन्स यहाँ पर डाइपोल मोमेंट और रिजल्टेंट फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है। ओके, सो द E equatorial and P are in opposite direction. Okay, so क्या हो जाएगा in terms of vector, वेक्टर नोटेशन में अगर मैं लिखूंगा तो क्या रिजल्ट मिल जाएगा मुझे? वेक्टर नोटेशन रिजल्ट मिलेगा E equatorial is equal to minus KP upon R square plus D square power 3 by। ठीक है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो ई इक्विटोरियल है उसका डायरेक्शन और जो पी का डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। ओके, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट हो गया। नाउ द स्पेशल केस, व्हाट इज द स्पेशल केस फॉर शॉर्ट डाइपोल? व्हाट हैपन फॉर द शॉर्ट डाइपोल? R is very very greater than D, and therefore R square plus D square is approx equal to R square, right? So E equatorial will be equal to Kp upon R cube. Okay, equation number 7. So since for short dipole, what was the E axial? E axial was 2 Kp upon R cube, right? So from equations 7 and 8, what we can conclude that E axial is equal to twice of E equatorial. Okay, got it? Now, is there any doubt? Okay, note it down.